Dear students of Class 6, I am Sana Ahmed. Let's start with moral science. Today we will discuss about chapter 5, value, forgiveness, and stories about building bridges. In this chapter we will learn about forgiveness. So kids, what is forgiveness? It is important to learn forgive. Storing up anger is a dangerous practice. By forgiving, we remove negative thoughts from our mind. Forgiveness brings people closer. Forgiveness is giving up the right to hurt the person who has hurt you. Forgiving is as important as forgiveness. It is better to forgive and forget. So kids, let's start reading the chapter number 5, Building Bridges. Jack and Bill were brothers who lived in a small village in France. They had enough wealth to lead a comfortable life. They lived in their respective farmhouses on adjoining farms happily. There was love and bonhomie between them and their families till they fell into conflict over a small fight between their wives. It was the first serious rift in 20 years of farming and living side by side. All this while they had been sharing machinery and cattle, trading labor and goods as needed without a hitch. Then the long collaboration fell apart. It began with a small misunderstanding that it grew into a major difference which exploded into an exchange of bitter words followed by weeks of silence. Their neighbors, who used to give their examples of brotherly love till now, too were surprised. The villagers tried to bring peace between the two brothers, but they were adamant. जैक और बिल दोनों भाई थे और फ्रांस के एक छोटे से विलेज में रहा करते थे। उनके पास इतना धन था कि वो एक आराम की ज़िंदगी जी सकते थे। दोनों भाई मिलजुल कर एक ही फार्म में काम किया करते थे और हंसी खुशी रहा करते थे। उनके बीच बहुत ही प्यार था और बहुत ही भाईचारे से रहा करते थे। लेकिन एक दिन उनकी वाइफ्स के बीच में छोटी सी लड़ाई से सब कुछ बर्बाद हो गया। वो लोग 20 साल से ही दोनों भाई एक दूसरे के आसपास ही रहा करते थे। दोनों भाई मिलकर के मशीनरी, कैटल, ट्रेडिंग लेबर्स, गुड्स और सब कुछ बिना किसी हिचकिचाहट के शेयर करके इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी के बीच वजह से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था दोनों भाइयों के बीच। उनके पड़ोसी जो उनकी मिसाल दिया करते थे अपने बच्चों को कि वो कितने भाईचारे से रहते हैं, वो खुद बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ थे कि एक छोटी सी लड़ाई की वजह से इतना कुछ हो गया। उनके गांव वालों ने बहुत कोशिश की कि दोनों भाई को एक कर लें, लेकिन वो नाकामयाब रहे। One morning there was a knock on the door of Jack's farmhouse. He opened it to find a man carrying a carpenter's toolbox. "Hello sir, my name is John Braganza. I am looking for a few days of work," he said. "Perhaps you will have a small job here and there. Could I help you?" "Yes, I do have a job for you. Look across the creek at that farm," said Jack bitterly. "That's my neighbor. In fact, he's my younger brother and we don't get along. Last week, he dug a wider passage for water into his farm, but he ended up creating a very wide creek in between our farms, and I am sure he did it just to annoy me. I want you to build me something so that we don't have to stand and see each other's face from across." John the carpenter said, "I think and I understand the situation. I will be able to do a job that will please you." Jack had to go to town for supplies, so he helped John get the materials ready and then he was off for the day. John worked hard all that day, measuring, sewing and nailing. अगली सुबह जैक के दरवाजे पे कोई
खटखटाता है। जब वो जाकर दरवाज़ा खोलता है तो उसे एक आदमी मिलता है जो कि कारपेंटर का टूल बॉक्स लेकर वहाँ पर होता है। वो आदमी कहता है, हेलो सर, मेरा नाम जॉन ब्रिगेंजा है और मैं कई दिनों से काम की तलाश में हूँ। अगर आपके पास कोई छोटी मोटी जॉब है मेरे लिए तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए। जैक कहता है, हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बढ़िया जॉब है। वो देखो, जहाँ फार्म में बाड़ दिख रहा है वहीं पर तुम्हारा काम है। वो मेरा पड़ोसी है जो उस तरफ रहता है। एक्चुअली वो मेरा भाई है और हम साथ बिल्कुल भी नहीं रहते। लास्ट वीक उसने मेरे फार्म में पानी छोड़ दिया था और अब तो उसने हमारे फार्म में एक डिवाइडर ही खड़ा कर दिया है। मुझे पता है कि वो जस्ट मुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है, तो मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा बनाओ कि हमें एक दूसरे का फेस देखना ही ना पड़े। जॉन कहता है कि मैं आपकी सिचुएशन समझ चुका हूँ और मैं कुछ ऐसा बनाऊँगा कि जिससे आप खुश हो जाएंगे। जॉन उसको कुछ सप्लाइज़ शहर से लाकर देता है और फिर वापस वो काम पर लग जाता है। दिन भर जॉन कटाई और दूसरे कामों में लग जाता है। At sunset, when Jack returned, John had just finished his job. Jack's eyes wide open and his jaw dropped. It was not what he had enough even thought or imagined. It was a bridge stretching from one side of the creek to the another. A fine piece of work with beautiful handrails, and to his surprise, his young brother Bill across the creek was coming to meet him with a big smile and arms wide open to hug him. जब शाम होती है और जब जैक वापस आता है तो वो देखता है कि जॉन ने अपना पूरा काम ख़त्म कर लिया है। जैक जब देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जॉन जैक के लिए क्या बना देगा। जॉन ने उसके लिए एक ब्रिज बनाया था जो फार्म के एक हिस्से से लेकर के दूसरे हिस्से से जाकर मिलता था। ब्रिज बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही अच्छी कारीगरी से बनाया गया था। ये देखकर उसका भाई बिल बहुत ही खुश हुआ और उससे उस ब्रिज पर चढ़कर अपने भाई जैक से मिलने आता है, जो कि बहुत ही खुश होता है और अपने भाई को गले लगने के लिए आगे बढ़ता है। You are really kind and humble, my brother. After all I had done and said to you, you still prove that blood relations can never be broken. I am truly sorry for my behavior, Bill said, and he hugged his younger brother. Jack turned to see Carpenter hoist his toolbox on his shoulder. No, wait, stay a few days. I have a lot of other projects for you, said Jack. I'd love to stay on, John the carpenter said, but I have many more bridges to build. John turned to take a look at the two brothers standing hand in hand and then walked on with a satisfied smile on his face. बिल कहता है, आप बहुत दयालु हो भाई में। आपने प्रूव कर दिया कि चाहे मैं जितनी भी गलती करूं, लेकिन जो ब्लड खून के रिश्ते होते हैं वो कभी भी तोड़े नहीं जा सकते। भाई मुझे माफ़ कर दो मेरे बिहेवियर के लिए। और ये कहते हुए बिल अपने भाई जैक के गले लग जाता है। जैक कारपेंटर की तरफ मुड़ता है तो देखता है कि उसने जॉन ने अपने टूल बॉक्स अपने कंधे पर रखकर खड़ा हुआ है। जैक कहता है कि जॉन तुम कुछ दिन और रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी प्रोजेक्ट्स हैं। जॉन कहता है मैं यहाँ रुकना चाहूँगा, लेकिन मुझे और भी ब्रिजेस बनाने हैं ताकि लोगों को मैं मिला सकूँ। फिर जैक मुड़ता है और देखता है दोनों भाइयों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। ये देखकर जॉन हंसी खुशी वहाँ से चला जाता है। So kids, the moral of the story is forgiveness. Forgiveness is a tough value to nurture. It may sound simple, but it is difficult virtue to master. A person who forgives is stronger than the one who hurts others.
You may take the examples of lives of people like Saint Kabir, Gautam Buddha, Guru Nanak, Mahatma Gandhi, etc. to make you understand the value of forgiveness. Now, kids, your homework is that to read the chapter thoroughly through this video. Thank you for watching this video. We will meet again through videos. Till then, stay home, stay safe, and study hard.